can detect your sugar, your blood pressure, your vital signs. They will also determine whether you have taken your medication, if you fell, if you got lost, if you're injured, if you had a stroke. They can actually predict all of this. Immunotherapies are also becoming very important because cancer is becoming very prevalent. So people are actually using now your own immune system to attack. So, sir, जैसे कि आपने बोला like we should decide that what we want to do, we should plan. So, जैसे अभी we are high schoolers, right? So, we don't have exact plan, like हमें नहीं पता कि अभी हमें क्या करना है. So, when you were high schooler, did you have that plan कि नहीं मुझे neuroscience ही करना है या फिर ये कैसे कब हुआ? That's a really great question. Dekho, choice actually causes paralysis. So right now, if you don't have any idea, that is the idea. Don't have any idea. Keep your mind open. You can only go from good to great in the area that you're good at. मैं जब आपकी उम्र का था तो हम लोग कराची रहते थे तो हॉक्स बे पे जाया करते थे, वहां पे हमारा एक हट था। तो जब सब लोग फैमिली वाले जो है कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई भाग दौड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं जाके एक पडल होती थी, अभी भी पता नहीं है, जहाँ पे पानी आके जमा हो जाता है जब टाइड हाई होती है, तो वहां बहुत से केकड़े हुआ करते थे। तो जब मैं जाके देखता था तो उनमें जो है एक बदमाश केकड़ा था। मैं जैसे ही उसके पास जाता था वो यूं करके आ जाता था कि अब अबे आजा, अभी तू बाहर निकल, अभी बताता हूँ तुझे। वो जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, तो छोटे-छोटे केकड़े जो है उसके करीब नहीं जाते थे। तो मैं ये कहता था कि इसको क्या मुसीबत आ गई है यार, ये क्यों इतना परेशान हर वक़्त लड़ने मरने पे तुला रहता है। तो मुझे अपनी वालिदा का जुमला याद आता था, वो कहती थी कि जो गुस्से में होती थी, माय ब्लड इज़ बॉइलिंग। मैंने कहा हाँ, इसके ब्लड में कोई ना कोई पंगा है। तो मैंने कहा कि मैं उसको टेस्ट कैसे करूँ? तो मैंने अपनी बहन की नेल पॉलिश चुराई, मामू इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, उनका सिरिंज मैंने चुराई, भाई का क्रिकेट का ग्लव्स चुराया और मैंने जाके उस पे छापा मार दिया। मैंने उस केकड़े को पकड़ लिया, मैंने कहा काटेगा तो नहीं। तो उसकी पूँछ के उस शेल के ऊपर मैंने लिख दिया किंग कॉन्ग। मैंने उसका ब्लड ड्रॉ किया, ब्लड ड्रॉ करके एक छोटे केकड़े के ऊपर मैंने क्रॉस लगा के उसमें ब्लड इंजेक्ट कर दिया। वो केकड़ा जो बहुत ही बुज़दिल था, वो भाग जाता था। अब जब मैं लंच करके आया तो मैंने देखा कि वो छोटा केकड़ा बड़े से बदमाश के सामने यूँ करके खड़ा हुआ है। अबे आजा, तुझे भी बताता हूँ मैं, राइट? So it turns out really amazing that there is something in the blood that does this, and I tested this hypothesis when I was really young. स्कूल में होते थे grade 10 में, 10वीं जमात में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो I actually didn't let that go. So I purified that peptide from the blood of a crab, which we call the King Kong peptide. And then I realized that it has serotonin levels are very high in his blood. So these are the things, the curiosity जब होती है ना आपको, तो आप उसकी खोज में लग जाते हैं। और अल्लाह देखें कुरान में कहता है कि वो शहद की मक्खी को वही करता है, वो चूंटी को वही करता है, वो दरख्त को वही करता है। आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह की सबसे चुनिंदा आप जो है मखलूक हैं। तो जब आप सिद्क़ के दिल के साथ किसी भी चीज़ को आप खोजने की, अपने नौकरी के चक्कर में नहीं, पैसे के चक्कर में नहीं, बल्कि खिदमत खल्क़ के चक्कर में जब आप सोचते हैं, तो वो आपके ज़हन में भी वही कर देता है। और वो कुदरत कहेगी देखो ये देख रही थी ना, ये देख रही थी, यही तुम्हें चाहिए था ना जवाब, ये देखो ये है। And then that it closes and at that moment you are touched by an angel. It's something to die for. You'll never be the same. So अभी अपने ज़हन को बिल्कुल खुला रखो। Sir, I had a question. Basically, what if we know what we want to do, but we don't know exactly how to get there? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे neuroscience, like I find it just so fascinating, but I don't know how like I should get there because like everyone says that the best way to get into research in this field is through medical. जिससे पूछो यही कहता है। तो आई वाज़ वंडरिंग कि आपकी स्टोरी में ये कैसे था? हाउ डिड इट लुक कि हाँ, मैं न्यूरोसाइंस में ही जाऊँगा? लाइक हाउ डिड यू हैव दैट हाउ डिड यू फाइंड दैट डायरेक्शन? So again, really great question. You don't really know until a bug is planted in your head, right?
आपको जिस चीज़ में लगन होगी, तजस्सुस होगी, you will find passion in that. How do you really know? हमने यहाँ कनाडा से we created what we called My Tech Fellowships. That is for high school students who could come and work in our labs and spend really 2 months of summer. And that is something that was really set out the program, but Pakistan में किसी ने भी उसमें interest नहीं लिया. So there are really many interesting and exciting opportunities for students to come and then learn about different disciplines. So keep your mind open, have an open mind, and then you will find your passion and your interest in a particular area. So, sir, every successful person is a sum of their habits. Like, आप भी एक बहुत successful इंसान हैं, and we can, and we, Astaghfirullah. no, you are such a remarkable personality. So, we want to know ke, what's that one of your habit that you always follow, and you would recommend it to us. Ke ye karo, like this is the reason for my success or something like that. The most important thing is really let your heart go after things that you love. Do what you love and do what you love and love what you do. And I think that's where really it is. Dekho, no two thumbprints are identical. No two irises are identical. No two people are identical. Yehi to Allah ki khilqat ka kamal hai, right? So everybody is different. They have their own individual passions. You are the only one who knows where lies your heart, what it is that you're good at, and what it is that you're going to go. But do it not for the sake of देखो हमारे ज़माने में सूरत हाल मुख्तलिफ होती थी वालिद कहते थे कि अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं है तो बीवी भी इज्जत नहीं करती है right? I did quite the opposite. I have never applied for a job in my life. I never looked for a job because तालीम को ज़रिया माश आपने कभी नहीं बनाना ये तो अल्लाह की सबसे बड़ी blessing है कि you have the opportunity to be able to really educate other people. As an academic, nothing gives me greater joy than to see people who stood on my shoulders. They see much further than I did at my time. So in them, I live vicariously forever. They make me immortal, right? So if you publish paper in your library, you will have those books that you have written, papers you have published. आप मरने के बाद भी आप जिंदा हैं. Beautifully said, Dr. Sam, mashallah, you have inspired us each moment and each point that we have discussed with us. We are all facing this challenge as educators as well. We have these students and the technology and AI is advancing so rapidly. What role can educational institutions play, schools and colleges to equip our students and bring that curiosity that is required and to have a purpose in life? What do you see? I think, mashallah, you have already done this and you are doing this at that level as well. I think what we need to do is we need to make these students uncomfortable in their seating. जाओ नौकरी कर लो ये पढ़ लो डिग्री हो जाएगी मेडिकल स्कूल में चले जाओ they are selling themselves cheap and short. राजिक जो है वो अल्लाह की ज़ात है मुसद्दिबुल असबाब अल्लाह की ज़ात है वो तहे समंदर में मछली को रिस्क देता है पहाड़ों की तहों में चूंटी को रिस्क देता है तो तालीम को ज़रिया माश नहीं बनाना आपने if it doesn't intellectually enlighten you the light bulb goes on. Education has no meaning and no purpose. So I think the important thing for our teachers and educators is to make them uncomfortable. Yeah. As I said to them, there are 100 million kids are coming in the job market, and the world is not creating 100 million jobs a month, right? So make sure you're in the top 10%, stay ahead of the game, and stay ahead of the curve. सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं हो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर आवर ब्रेन इज अमेजिंग इट वर्क्स 24/7 एवरी डे होल ईयर बट जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं वो रुक जाता है तो ऐसा क्यों होता है एग्जाम में तो क्योंकि तुमने जो है उसको पढ़ा ही एग्जाम की वजह से था सो वर्किंग मेमोरी में अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोन नंबर है
आपने शाम को 5 बजे इस पे कॉल करनी है, ठीक है? आपने जो है वो नंबर आपके ज़हन में याद रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने वो नंबर मिला लिया, उसके बाद मैं आपसे पूछूँ कि वो क्या नंबर था, you won't remember it, right? Because it is use dependent. अच्छा, आपको स्कूल में इम्तिहान था, आपने याद किया और हो गई कराची में बारिश, जिसकी आपने पूरा साल दुआ माँगी थी, राइट? आपकी दुआ पूरी हुई, बारिश हुई, फ्लड आ गया, सब कुछ हो गया। अब टीचर ने कह दिया, अब ये आज इम्तिहान नहीं होगा, इम्तिहान 2 दिन के बाद होगा। आपकी वो वर्किंग मेमोरी उसको रिटेन रखेगी, आपको याद होगा। लेकिन जैसे ही आपने इम्तिहान दिया, वो आपके ज़हन से ऐसे गायब हो गया। सो वर्किंग मेमोरी है। But the other thing is, important thing is that fear, anxiety, and stress, they also make your brain freeze. So many a times your brain, आप जब इम्तिहान देने बैठते हैं, आपको सब याद था। आपने उसको याद इस सीक्वेंस में किया था कि पूरा रटिफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन। तो आपने उसको रट लिया, जो रॉट किस्म की आपकी वो थी, तो वो अगर उसमें से एक लफ्ज़ भी मिस है, तो आपकी पूरी की पूरी तस्बीह के दाने आप भूल गए। So the sequence that you actually forget it. So what you need to do is that when you learned, there were certain cues that were important for you to remember. All of a sudden, when you're in the exam room, those cues are no longer there. And your brain is looking for cues. जब वो cues आपको नहीं मिलती, तो your brain actually freezes, right? It's called the interference of your memory. When you were learning it, there were things that interfered that causes your memory to be fragmented. जब वो fragmentation हो जाती है, तो वो jigsaw के puzzle हैं, आपको वो puzzle ढूँढने में लग जाते हैं. Take a few deep breaths, relax, right? Maybe drink some cold water and you will see everything will fall in its place. Sir, we know that the memory is stored in the cerebrum, that part of the brain. Like, but in what form it is stored? Like, कंप्यूटर में So, तो वो होती है, बाइट्स होते हैं, गीगाबाइट्स वगैरह, बस बट हमारे ब्रेन में कैसे जो है वो? so you know, your memory is processed through your cortex as well as stored in hippocampus. Hippocampus जो है आपकी लाइब्रेरी, आपके पास जितने पीछे किताबें हैं, इनको आप एक छोटी सी यूएसबी में स्टोर कर सकते हैं, right? You can have hundreds of millions of books. You can store it on a simple USB. So the same thing happens in your brain. You have synaptic connections. When two brain cells talk to each other, there are certain changes that happen from one cell to another. That memory is encoded in the form of synaptic connectivity, what we call neuroplasticity. That gets tagged. आपके जैसे स्कूल में आते हैं, तो आपको टैग कर दिया जाता है। अब मैं एक सिंपल सी मिसाल दूँ कि आपकी मैडम ने क्लास में कहा कि ये लो गुब्बारे, इसको फुलाओ। सबने गुब्बारे फुलाए, उन्होंने कहा कि अपना नाम इस पे लिख दो। तो सबने जो है अपने-अपने नाम लिख दिए, उन्होंने कमरा पूरा गुब्बारों से भर दिया। फिर आपसे कहा कि गो एंड फाइंड योर ओन बलून। Everybody will be running around in a chaos, right? And then what you should do is that your teacher कहेंगी, देखो, कोई भी जो बैलून भी तुम्हें मिलता है ना, वो बैलून लेकर जिसका है उसको दे दो। Everybody gets their balloons. So this is really the organization structure in your hippocampus, which is right in the middle. It looks like a horseshoe. It's like this. Hippocampus is the one that stores your memory. It's the library in which your memory is encoded in the form of synaptic connections. Those synaptic connections, the more you use, the more they get strengthened and the more stable your memory is. If you do not repeat it or stabilize that memory, you actually forget those things very quickly, right? So the memory doesn't get encoded in your memory. So this is a synaptic connections. Hopefully next time when we talk, I can actually show you how it is done at the synaptic level. This is absolutely inspiring, Dr. Sam, mashallah. And I would like to ask about your university that you're building. That is, alhamdulillah, congratulations. And
the aspiration, the spirit you have to serve back to your country. I also got to know that you got an offer from the neighboring country, and you prefer to work for your own country. What was that spirit? We would like our students to know about it. देखिए, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। पाकिस्तान हमारी माँ है, माँ डायपर में भी क्यों ना हो, माँ माँ होती है। So I think it's just really the opportunity to give back. Give back क्योंकि हम वहीं टाटों के पड़े हुए, वहीं बसों के धक्के खाए हुए, हम लोग पाकिस्तान से निकल आए, लेकिन हम में से पाकिस्तान नहीं निकला। So it is really giving back to our younger generation and giving the opportunity to build something that will be state of the art, that will be unique, ताकि लोग बाहर से पाकिस्तान आएं, पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। So माशाल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, ये सूरह रहमान की तफसीर है, यहाँ आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। And our young, माशाल्लाह ये दोनों बच्चियाँ और आपके सारे students भी हैं, they're brilliant, they're really smart, and anybody could take them and turn them into anything, Albert Einstein's to you name it. So I think the opportunities really need to be there, and we're just trying to create that. Dr. Sabir, आपने Muslim scientists की aspirations की बात की थी. If you can see this book, we also have the same inspiration from the golden era of Muslims, जिसको हम काफी refer भी करते हैं. This is the book of 1001 inventions published by National Geographic Channel. So just to connect के माशाल्लाह आपके साथ इतनी सारी बातें की. Thank you very much for taking out your valuable time and spending that time with us. लेकिन प्यास थोड़ी सी बढ़ गई है बजाय कम होने के. तो लगता है आज का दिन भी काफी नहीं था. I think students have a lot of questions. I also have a lot of questions to ask. But time is short, and we of course committed for 1.5 hours. But I think we have taken more time because you logged in earlier, and we thought we should start early. Our principal, Dr. Ghazala Siddiqui, she is not here in Karachi right now, but I can see her online. Ghazala, would you like to talk to Dr. Naweed at the moment? Assalamu alaikum, Doctor. Yes, we are just traveling, so I just thought I must listen to you, but I just actually entered more than halfway through. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, such a grand achievement, attainment that you have made, and आपकी जो भी बातें मैंने अभी सुनी, I mean, they were really, I think that's where that's what needed, कि हम अपने नेशन को, अपनी उम्मत को, अपने बच्चों को जो है वो हम इस तरह से जगाएं कि उनको सोचना सिखाएं. That's what our vision is. The first line of the statement of Generations School Vision says, a deep thinking institution for global leaders, वो thinking जो है ना, वजह से इकबाल ने कहा कि तदब्बर, अगर फिक्र खाम है तो फिर ये शैतान को फिर जो है उस पे फिक्र को तदब्बर में तब्दील करने के लिए अगर फिक्र खाम हुई तो फिर वो इंसान को शैतान बनाने का तरीका. So that's what we really believe in, and that is really life. और आपने माशाल्लाह जो बातें की, तो I could see कि आपकी बहुत in depth माशाल्लाह आपकी value based भी और intellectual, highly intellectual. That's why आप हैं जहाँ पर आप हैं. So thank you so much. आपका इंशाल्लाह हमें अगले sessions भी रखने चाहिए. I'm a medical doctor by my academic background. I jumped into education about 34 years back. And we opened up this school in Karachi. We were in the Middle East, and we came back to Pakistan. We were thinking what to do. My husband is a child accountant, and eventually it just occurred to us, oh, this is इस चीज का फकदान है कि यहाँ value, यहाँ deeper balanced education जो है, इल्म और तालीम कैसे दी जाए. तो आप अभी पाकिस्तान में based हैं या आप अभी I missed that. Yeah, I'm in Canada. Pakistan आना जाना रहता है, and inshallah, next time I'll visit your school as well. You must. We'll have a direct conversation. I come quite often to Pakistan, and then I will offer 5 scholarships to your youth if they're interested in spending summer with me in the beginning, so they can learn some interesting. देखिए, आपने बात बिल्कुल सही की कि एक कौम की, एक नस्ल की जहालत दूसरी की रिवायत और तीसरी का अकीदा बन जाती है.
So I think, we're getting to a stage where education is, meant to be just for the sake of job. Exactly. I fully agree. For the sake of job, उसमें भी डॉक्टर साहब, the tyranny is that it's becoming, आपने जैसे कहा ना, वो अकीदा तो ये बन रहा है कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा पैसे सबसे जल्दी कैसे बनाए। तो उसमें वो जो दुनियावी तालीम का भी जो सिर्फ एक रह गया था एस्पेक्ट, वो दुनियावी तालीम भी जो है ना वो कम अज कम हो। द होल फोकस इज ऑन हाउ टू मेक मनी। दैट्स वेरी स्कैरी। और वो हम अपने स्कूल में ये बच्चे माशाल्लाह बैठी हैं, एंड द रेस्ट वी से कि फॉरगेट अबाउट द मनी। रिस्क तो जैसे आपने कहा, रिस्क तो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। हलाल रिस्क या नॉन हलाल रिस्क वो आपकी चॉइस है। मेक बेटर चॉइसेस फॉर द हाईएस्ट पर्पस इन लाइफ, एंड दैट इज टू प्लीज अल्लाह। तो हम फिर वो, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि तालीम को या इल्म को हम सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ वही बना लें। इकोनॉमिक तो बनेगी कभी ना कभी, पर वो सेकेंडरी और टर्शरी है। प्राइमरी थिंग इज कि आप अपनी पोटेंशियल कैसे मैक्सिमाइज करते हैं कि आप बेनिफिशियल हो और दुनिया और आखिरत दोनों, आपकी आखिरत भी बन जाए माशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह जरूर, आप जब भी आए प्लीज, स्पेशल इनविटेशन वी विल बी हाईली ऑब्लाइज। अगर आप प्लीज स्कूल जनरेशन स्कूल जरूर आप आइए, एंड विल कॉल अप द, आई विल हैव द स्टूडेंट्स देयर, टीचर्स, स्टाफ, and maybe some parents, but we need people like you to inspire the nation. जी And देखिए, why you माशाल्लाह जो आप कर रही हैं और आपका स्कूल कर रहा है, आई थिंक इट्स अ रियली राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान में तो आप देखिए, you have 22.9 million children who have not even seen a school building. So I also support Takmeel, which we have developed now उन जगहों पे जहाँ बिजली नहीं है, we use solar panels and we have a school in a box system that we have set it up Takmeel के नाम से. So we have over now 50 schools whereby those kids who missed out the school age, we teach and train them. And 5 साल का course हम 1 साल में उनको कराते हैं with a highly sophisticated education system में. तो पाकिस्तान में देखिए, अगर हमने इल्म पे इन बच्चों पे तवज्जो ना दी, we will be the big losers in the years to come. absolutely. And Pakistan was actually brought into being with a grand plan, alhamdulillah, 27th of Ramadan, Jumatul Bida. So Allah has grand plans. It's just that we make the right choices to make it happen, inshallah. It will happen, inshallah. इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे जो है ना, बस करेंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह सो मच। मैं नौकर Dr. Naweed, एक बच्ची हमारी, she is not part of the whole, but she has a question. Just last question from her. Yes, Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. As in the beginning of the podcast, you showed us the video of the girl who was nearly passing away, but the robot copied all her memories before her brain death. So in this scientific research, there is not only scientific issues, there are many ethical issues as well. People are concerned about the religious aspects of this issue. So how do you counter that? So again, really great question. Ethics is one of the most important thing, whether you could do this. But, we are getting very close to tapping into human consciousness. Let me back it off a little bit. Since it's a very deep question, so I have to answer it. हमारी जो ख्वाहिशात हैं, they are just like animals. We eat, we sleep, we do all those things. It's animalistic instincts. But let's say that your animalistic instincts got really, really upset, and you are upset with your neighboring country, and you say, "Salon ko chhodna nahi." Your intellect says, "Inko maro." But your intellect can't actually do anything on its own. It will go and beg your knowledge. How should I do this? So your knowledge now comes in and it says, "Aisa karo कि ये तुम F-16 fighter jet बना लो, and then you have laser technology, fire some bombs and destroy them." Right? अब आपकी ख्वाहिशात मिल गई हैं आपकी इंटेलेक्ट के साथ, आपकी इंटेलेक्ट मिल गई है आपकी इल्म के साथ,
ये सारे के सारे उस साजिश में मुलविस हो गए। तो इस वक्त आपका जो कॉन्शियस है, योर कॉन्शियस विल से, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि एक जिंदगी को बचाना ऐसे ही जैसे इंसानियत को बचा लिया। एक जिंदगी का ज़िया ऐसे ही है कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि आई शुड नॉट डू दिस, राइट? सो जो आपका कॉन्शियस है, दिस इज स्टिल योर्स। जस्ट so I hope that you remember this one thing if you don't remember anything. The data is not information. Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom requires conscious. And so far, humans are the only ones still have conscious. But we are tapping into that part of the brain where resides your conscious. If you could actually get access to it, these robots will also become conscious. They will become sentient. These are like the idea you discussed. It is in fact not very far-fetched. हम खुद भी AI से बातें कर रहे होते हैं अक्सर अपनी मतलब अपनी एवरीडे लाइफ में भी एंड इनफैक्ट कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने टिकटॉक की बात की तो आई एक्चुअली डिस्कवर्ड यू थ्रू इंस्टाग्राम रील्स. I have known you for like 3 years now. Because like I enjoyed a public address of yours like a few years back, and like usi se I started looking into your works and stuff. So you said something that really resonated well with me, or abhi bhi you brought that up. So I thought कि that gives us such great vision. You said that our purpose as humans and Muslims is to really just serve humanity. तो आपने अभी भी बात की इल्म से कनेक्ट किया आपने, तो that gives us just such a wonderful insight कि how exactly we're supposed to serve humanity, like things as simple as अभी तो हमारा काम है पढ़ना, ताकि हम उस मतलब एक ऐसे मतलब हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़े कि हम एक्चुअल में एक डिफरेंस बनाएं इस दुनिया में. No, I totally agree. And mashallah, I'm so proud of you. You guys are all very brilliant, bright eyes. इतनी देर तो हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं. तुम लोग बेचारे इतने नहीं सर. और शायद हम मजीद आपसे बात करते डॉक्टर साहब, लेकिन टाइम इज शॉर्ट एंड ऑफ कोर्स इट्स नाइट टाइम एट योर टाइम जोन. So Jazakallah, thank you so much. It was an enlightening discussion, and alhamdulillah, all of us really got inspired by the work that you are doing and the advice and the wisdom that you have shared with us. We would be really honored to welcome you at Generations on your next visit to Pakistan, inshallah. And our faculty and more students will have that exposure to meet face to face with you, inshallah. So please do let us know. And also, I would like to know about the collaboration that you mentioned in your talk, while the internship opportunity in your university in Canada. So please do let us know, and our students are really eager to explore those opportunities, and we would like to learn from you more, inshallah. So thank you very much, Jazakallah Syed, for being with us and sharing your insights and wisdom with us. Jazakallah Khair, and hopefully see you again. And जब भी आपके पास टाइम हुआ, हम आपको कहते रहेंगे और आपसे सीखते भी रहेंगे, इंशाल्लाह. मैं नौकर. Jazakallah sir. Jazakallah sir. We hope to see you again very soon, inshallah. And yes sir, I personally am very inspired by you, and मुझे कुछ करना है आपकी तरह रिसर्च करनी है जरूर, and I'll make a difference. I'll make sure that You are at the right place. You've got great teachers. Your principal, mashallah, has got that vision. And I think it's not what you have, it's what you do with it, what you have. yes. You purpose opportunities and make it count. But don't count hours in a day. Make every hour in a day count. Life is too short. You're not going to come back, right? So make the most of it, inshallah, and you will. I'm very proud of you. Jazakallah sir. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. Alaikum assalam. Jazakumullah khair. Fi amanillah.